नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर विकल चौरसिया, आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। काफ़ी दिनों से हम वीडियो बना रहे हैं, अलग अलग इक्विपमेंट में हम काम कर रहे हैं। कोरोना से लड़ने के लिए हमने कुछ इक्विपमेंट्स बनाए हैं, कुछ ईवी रेस बेस हम लोगों ने सैनिटाइजेशन मशीन बनाया हुआ है। हमने स्प्रिंकलर डेवलप किया हुआ है। हमने कुछ चेम्बर्स डेवलप किया जिसके अंदर पास होने के बाद लोगों के ऊपर स्प्रिंकलर करके हम उसको सैनिटाइज कर सकते हैं। बट हम लोग जो इसमें यूज़ कर रहे हैं, हम कोई केमिकल यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम इसके अंदर एंजाइम्स टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि आप देखोगे, हमने एक एंजाइम 19 करके एक प्रोडक्ट बनाया हुआ है। ये एंजाइम 19 जो प्रोडक्ट है, बेसिकली एंजाइम बेस्ड प्रोडक्ट है जो सभी वायरसेस पे काम करता है। ये वायरस को 2 पार्ट में, 3 पार्ट में, 4 पार्ट में डिवाइड कर देता है। वायरस के ऊपर जो बायोफिल्म होती है, उस बायोफिल्म को वो डाइजेस्ट कर देता है। तो हम विदाउट एनी केमिकल एंजाइम्स की हेल्प से हम अपने आप को कोरोना जैसे बीमारियों से बचा सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एंजाइम्स किस तरीके से काम करते हैं। तो एक छोटा सा वीडियो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जिसके अंदर एंजाइम्स का वर्किंग आपको समझ में आएगा। थैंक यू। Every single second, inside every living cell, thousands of chemical reactions are taking place. These reactions are performed by enzymes. An enzyme is a protein that catalyzes a chemical reaction. It initiates the reaction, speeds up the reaction's progress, and makes sure the outcome is always the same. These enzymes often work together to form longer pathways, such as the citric acid cycle, which is a series of chemical reactions used by cells to generate energy from carbohydrates. The essential tasks of life, such as metabolism, protein synthesis, and cell renewal and growth, are all regulated by enzymes. The life-sustaining power of enzymes lies in the fact that they catalyze reactions in mild conditions of pH, temperature, and atmospheric pressure. The rates of catalyzed reactions are millions to trillions times faster than those of the same reactions uncatalyzed. To speed up a reaction in the absence of enzyme, additional energy would need to be provided as heat, which jostles the substrates and occasionally provides enough energy to trigger a reaction. In the course of most reactions, an unstable and highly energetic transition state is formed as the substrates are transformed into products. An enzyme acts as a template for the reaction, binding to its substrate and holding it in the proper position to form the product. An enzyme also surrounds its substrate with reactive groups that stabilize the transition state, making it easier for the reaction to occur. To understand how enzymes work, let's take a closer look at a reaction in the citric acid cycle that is catalyzed by the enzyme aconitase. Aconitase binds to its substrate citrate and removes a hydroxyl group and a hydrogen atom to form the intermediate cis-aconitate. It then adds the hydrogen and hydroxyl back in slightly different positions to form the product isocitrate. In the active site, some amino acids are perfectly positioned to recognize the substrate and hold it in the optimal position for the reaction to begin. Some amino acids are involved in recognizing and holding the substrate. Other amino acids are directly involved in catalysis. Histidine 101 acts as an acid by donating its proton. Thanks to the chemical environment of serine 642, it can act as a base by accepting the proton from the substrate. The active site of aconitase also contains an iron-sulfur cluster that stabilizes the substrate electrostatically and helps to position it relative to the catalytic residues. The first step in the reaction is dehydration. In this step, histidine acts as an acid and protonates the hydroxyl on the substrate, allowing it to leave as a water molecule. Serine then acts as a base, extracting a hydrogen atom from the opposite side of the substrate, forming the intermediate cis-aconitate. Cis-aconitate then flips upside down, and the complementary hydration reaction is performed. In this step, histidine grabs a hydrogen atom from a passing water molecule, placing the resulting hydroxyl group back onto the substrate. Serine then returns its hydrogen atom, and the final product isocitrate is released. Notice that the enzyme itself was not changed by the reaction. It extracted a hydroxyl group and a hydrogen atom, and then put them back,
thus starting and ending in the same state. This is the hallmark of a catalyst. When it finishes a reaction, it is ready for the next, so it can perform thousands of reactions in a row. Notice also that the shape of an active site is often flexible. Many enzymes surround their substrates, enclosing them to form the perfect environment for a reaction. Enzymes are fundamental to life on Earth, working every second of every day to maintain life processes in every cell in every living creature on the planet. तो जैसा दोस्तों आप लोग ने अभी देखा कि एंजाइम किस तरीके से वर्क करता है। हमारे शरीर में काफ़ी एंजाइम्स होते हैं जो अलग अलग तरीके से अलग अलग लेवल पे अपने काम करते हैं, जिसकी वजह से हमारा खाना हजम होता है। और कुदरत ने एंजाइम्स को अलग अलग कामों के लिए डिज़ाइन किया हुआ है। जैसे हमारे ऑफिस में क्लर्क का काम क्लर्क करता है, मैनेजर का काम मैनेजर करता है, मैनेजर क्लर्क का काम नहीं कर सकता, क्लर्क मैनेजर का काम नहीं कर सकता है। उसी तरीके से एंजाइम्स को उसका स्पेसिफिक ड्यूटी दिया हुआ है। कुछ एंजाइम जो खाली प्रोटीन पे काम करते हैं, तो जो एंजाइम्स प्रोटीन पे काम करते हैं, जैसे आप जानते हो कि कोरोना वायरस प्रोटीन से बना हुआ है, तो उस प्रोटीन रिच वायरस को मारने के लिए कुछ एंजाइम्स डेवलप हुए हैं, जिन एंजाइम्स का एक ही काम है कि प्रोटीन्स को टुकड़े में बांट देना है। तो हमने एंजाइम 19 करके जो प्रोडक्ट अभी लॉन्च किया हुआ है, इसका वही फंक्शन है कि ये आपको सैनिटाइजेशन में अगर हम इसको यूज़ करते हैं, हम स्प्रेइंग में यूज़ करते हैं, सैनिटाइजेशन चेंबर में इसका अगर हम लोग स्प्रे करते हैं, तो आपको तकरीबन 24 घंटे का ये सेफ्टी प्रोवाइड करता है। ये जब आपके बॉडी पे स्प्रे हो जाता है, तो स्प्रे होने के बाद में आपके शरीर के बारीक बारीक पोर्स में जाके वो बढ़ जाते हैं, आपके कपड़े पे बढ़ जाते हैं। और एक गुड इंजाइम है, ये आपको ह्यूमन बॉडी को कोई तकलीफ नहीं देते हैं, ना आँख में तकलीफ होता है, ना इनहेल में होता है। और इसका सारा सर्टिफिकेशन हुआ है हाफकिन इंस्टीट्यूट की तरफ से हमें GHS5 का सर्टिफिकेशन मिला है, जो ये इंडिकेट करता है कि आपके ह्यूमन बॉडी के लिए कोई तकलीफ नहीं देता है। तो अगर इसका यूज़ आप अभी से चालू कर देते हो, तो आप खतरनाक केमिकल से बच जाओगे। और इस एंजाइम्स के सपोर्ट से हम अपने सराउंडिंग में गुड बैक्टीरियाज, गुड वायरसेस हम डेवलप करके लेंगे, जो हमारे शरीर के लिए काफ़ी ज़रूरी है। तो मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप एंजाइम्स के और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखिए और उसको समझिए, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, तो जो नया अपडेट होता रहेगा हम आपको भेजते रहेंगे। थैंक यू।